Good afternoon to all of you. Am I audible, visible to all of you? Am I audible? Very good afternoon, everyone. Welcome to PW OPSC Wallah. So, ये गोटे नुआ सीरीज आमे ऑलरेडी स्टार्ट करिचे समस्त जानिथिबे प्रतियोगी सीरीज. Yes. Good afternoon, Manas, Anupama, Nitish, everyone those who are present here. So, ये सीरीज आमे स्टार्ट करिचे प्रतियोगी सीरीज. प्रतियोगी सीरीज रे यार ऑब्जेक्टिव कोन? आमे पूर्वरु आरंभ सीरीज कंटिन्यू करूतले. जो सीरीज रे आमे किछि इंपोर्टेंट कांसेप्ट ऊपर डिस्कशन करूतले विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट ऊपर आमे डिस्कशन करूतले आरंभ सीरीज रे. ये सीरीज रे आमे फोकस करिवा ऑन एमसीक्यूज एंड विथ कांसेप्ट्स. किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू आमे प्रैक्टिस करिवा विथ रिस्पेक्ट टू कांसेप्ट्स. से कांसेप्ट गुडा को मध्ये एठी आमे डिस्कशन करिवा. Almost all the aspects of economics आरंभ सीरीज रे मु कवर अप करिछि लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, economic planned economic development, growth, development, happiness, basic concepts like demand, supply curve. ये सब पॉइंट गुडा को मु सेठी डिस्कशन करिछि. एठी नुवा जिंस हम कोन पढिबा द सेम टॉपिक मानक ऊपर हमें किछि एमसीक्यू प्रैक्टिस करिबा. इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, प्रत्येक टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा. से क्वेश्चन पछरे थिबा इंपोर्टेंट कांसेप्ट को मध्ये हमें बुझिबा. सो एको हमें एमसीक्यू विथ कांसेप्ट ये सीरीज को हमें ए हिसाब रे आगे नबा. सो आज किछि इंपोर्टेंट टॉपिक अछि. आज रो टॉपिक मु कवर करिबे अबाउट प्लानिंग, नेचर स्कोप ऑफ प्लानिंग, देन इन्फ्लेशन रो किछि इंपोर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट रो किछि इंपोर्टेंट टॉपिक. सो ये प्रत्येक पॉइंट को आज हमें डिस्कशन करिबा थ्रू एमसीक्यू. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. समस्त रेडी? All of you ready to answer the questions? Very good afternoon, Niharika. Yes. So first question हमें देखिबा, with the term economic growth is explained by को समय रे इकोनॉमिक ग्रोथ गोटे कंट्री रे इकोनॉमिक ग्रोथ होउछ बोली हम कहला. इको द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय इधर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन पढंतु. ऑप्शन पढिला पर आंसर करिवे. तापर हम डिस्कस करिवा कि ए बी सी डी भीतर व्हाट इज द करेक्ट आंसर. जदि डी करेक्ट आंसर कहउछ, त्रिलोचन कहउछ कि डी करेक्ट आंसर, हमें देखिबा व्हाई ए बी सी दे आर नॉट करेक्ट आंसर. ऑप्शन वाइज एनालिसिस करिवा. समस्त आंसर कोंतु तापर हम आगो बुझिबा. सागरिका डी, मानस, त्रिलोचन डी, अदर्स अन्य माने डी, all D. Okay, all of the above. All of the above correct. ठीक अछि. देखियो ताहले हमें इकोनॉमिक ग्रोथ कहले प्रथम कथा हमें कोन बुझ. इकोनॉमिक ग्रोथ रे हमें कि दीटा कांसेप्ट पढिथिलि. इकोनॉमिक ग्रोथ रे भाबुति समस्तकर मने थिबो. गोटे पढिथिलि इकोनॉमिक ग्रोथ, आ गोटे पढिथिलि इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दीटा इंपोर्टेंट कांसेप्ट ऊपर हमें डिस्कशन करथिले. कहि दोछि गोटे हला ग्रोथ, आ गोटे हला डेवलपमेंट. ना मते कोन ग्रोथ और डेवलपमेंट भीतर which is the quantitative aspect. या भीतर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कोडा एवं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कोडा ना हम देखथिले. ग्रोथ इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. ग्रोथ ता कोन ना, ग्रोथ ता होची क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. डेवलपमेंट ता कोन ना, डेवलपमेंट ता होची क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. एटा होची क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. सो ग्रोथ होबा को समय हम कहउतले व्हेन देयर इज इंक्रीज इन जीडीपी. जेतोले जीडीपी बढ़ुतला, जीडीपी बढ़ियार अर्थ कोन ना, जीडीपी बढ़ियार अर्थ होची प्रोडक्शन इंक्रीज होबा. कोन बा प्रोडक्शन इंक्रीज होबा को हम कहउतले जीडीपी बढ़ुची. बात को हम कहउतले दैट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ. तो देखिबा इकोनॉमिक ग्रोथ जेतोले जीडीपी गोटे इकोनॉमी रे जेतेबेले जीडीपी इंक्रीज होउची
गोटे इकोनॉमी रे तो जीडीपी इंक्रीज होची देखियो हम एतर को इंपैक्ट पड़ुची इकोनॉमी पर स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी स्ट्रक्चरल चेंज रो मीनिंग कोन की कहि परिबे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज स्ट्रक्चरल चेंज रो अर्थ होची हमें देखिथिले प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर तीनटा इंपोर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जेतेबेले प्राइमरी रु वर्कर मूव करंदी कोठी कि ना सेकेंडरी को एवं टर्शियरी सेक्टर को हमें ताको कहउतले स्ट्रक्चरल चेंज ता माने सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर रो वैल्यू इकोनॉमी रे बढ़ुची जीडीपी रे बढ़ुची कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर टू द जीडीपी दैट इज इंक्रीजिंग हां कि नहीं जेतेबेले कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर बढ़ुची टू द जीडीपी हमें कहबा सेतेबेले इकोनॉमी रो ग्रोथ होउची ना ग्रोथ होउनी से समय रे हमें कहबा इकोनॉमी रो ग्रोथ होउची ना ग्रोथ होउनी यस और नो क्विक समस्त टिके जल्दी जल्दी आंसर दे मु कहली प्राइमरी रो सेकेंडरी एवं सेकेंडरी रो टर्शियरी सेक्टर को जेतेबेले हमें जाउछे मूव करूछे सेतेबेले एठी हमें कहबा इकोनॉमी रे ग्रोथ होउची ना ग्रोथ होउनी आंसर इज यस इकोनॉमी रे ग्रोथ होउची सो ये ला कोन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी करेक्ट आंसर देन सेकंड देखिबा इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम जदि ग्रोथ हुए ताहले जीडीपी बढ़िबो जदि जीडीपी बढ़िबो ताहले नेशनल इनकम बढ़िबो जदि नेशनल इनकम बढ़िबो ताहले मते कोन पर कैपिटा इनकम बा पर कैपिटा प्रोडक्शन बढ़िबो ना बढ़िबोनी पर कैपिटा प्रोडक्शन एंड पर कैपिटा इनकम बढ़िबो ना ओवरऑली एंटायर कंट्री पे बढ़ुची नेशनल इनकम इंक्रीज होची नेशनल प्रोडक्शन इंक्रीज होची ताहले पर कैपिटा इनकम एंड पर कैपिटा प्रोडक्शन बढ़िबो ना बढ़िबो नै आंसर इज यस बढ़िबो ताहले बी आउ सी ऑप्शन भी करेक्ट ताहले बी आउ सी ऑप्शन भी करेक्ट यस और नो बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट यस और नो देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर then what is the correct answer a d is the correct answer right d is the correct answer any doubt समस्त बुझिले ना का को डाउट अछि आगो बुझिबा ताले नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा अच्छा मते को एडी ए जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को जदी गोटे क्वेश्चन आसे जीएनएच थ्रू जीएनएच व्हाट डू वी मेजर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस थ्रू हमें ग्रोथ मेजर करूचे ना डेवलपमेंट मेजर करूचे व्हाट डू वी मेजर थ्रू जीएनएच व्हाट डू वी मेजर थ्रू जीएनएच ग्रोथ ना डेवलपमेंट क्विक व्हाट डू वी मेजर थ्रू जीएनएच ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस थ्रू हमें कोन मेजर करूचे ग्रोथ मेजर करूचे ना डेवलपमेंट मेजर करूचे क्विक ठीक है जल्दी कहियो समझते जीडीपी थ्रू रे ग्रोथ मेजर करूचे ना डेवलपमेंट मेजर करूचे जीडीपी थ्रू रे ग्रोथ मेजर करूचे ना डेवलपमेंट मेजर करूचे जीएनएस थ्रू रे डेवलपमेंट मेजर करूचे बहुत बढ़िया पॉइंट सागरिका नीतीश त्रिलोचन जीडीपी थ्रू जीडीपी ग्रोथ ना डेवलपमेंट थ्रू जीडीपी द करेक्ट आंसर इज ग्रोथ करेक्ट आंसर इज ग्रोथ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा which of the following scenarios explain economic development which of the following scenario explains economic development improvement in the distribution system improvement in technology improvement in production all of the above को कंडीशन आ भितर हेले हमें कहबा कि देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी रे डेवलपमेंट होउछ बोली हमें केते बेला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जदी बढ़े डेवलप हुए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हुए कोन हो देबासिस को जे इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन करेक्ट प्रोडक्शन इंप्रूव हो प्रोडक्शन मध्ये बढ़िबो प्रोडक्शन बढ़िला हमें कहते ताको डेवलपमेंट नाउ ग्रोथ इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट हमें पढिथिले ग्रोथ इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट कहीं ना ग्रोथ का होची क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एटा दरकार डेवलपमेंट कौन ना डेवलपमेंट होची क्वालिटेटिव एस्पेक्ट डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हां कि नहीं
सो ये कुछ इम्प्रूवमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम माने समस्त पाखे पहुंची पड़ुवा दरकार अर्थात आम कहे एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी क्या डिस्कशन करुचे एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऊपर डिस्कशन करुचे कहार ना प्रत्येक ईच एंड एवरी कमोडिटी ये समस्त पाखे पहुंचवा दरकार एवरी कमोडिटी ये समस्त पाखे पहुंचवा दरकार सेकंड कौन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी जब इंप्रूवमेंट हुए टेक्नोलॉजी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यदि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होची अपग्रेडेशन होची ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन बुझेला देन इज इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन सो ये तीनटा जाक फैक्टर या भीतर आसीबे कि नहीं all of the options are correct all of the above correct answer is D next question को आसीबा which of the following is a non-economic factor of growth non-economic factor of growth किए कुंदु इकोनॉमिक फैक्टर किए ना जो गुडा सहित इकोनॉमिक एनालिसिस इन्वॉल्व होई के रहउची हमको भी लेबर लैंड बा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये सब बोले इकोनॉमिक फैक्टर्स देन देयर आर सर्टेन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो को नॉन इकोनॉमिक फैक्टर which of the following is a non economic factor of growth समस्त आंसर कहते नीतीश 1 मानस 1 सागरिका ए त्रिलोचन सी देखिए आम गोटे पर गोटे एग्जामाइन करिवा फर्स्ट ऑप्शन देखिवा आइडियल लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर ता माने कहा ऊपर कहूची ना ये लॉ ऊपर कहूची लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर माने कोन लॉ फॉर्मुलेशन ऊपर ये कहूची कहा पर कहूची ना लॉ फॉर्मुलेशन ऊपर कहूची ना लॉ फॉर्मुलेशन प्रॉपर लॉ दरकार गोटे कंट्री रे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपर्ली हवा पई हमको प्रॉपर लॉ आवश्यकता अछि से बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करिया पई हो बा सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन करिया पई हो बा कम्युनल वायलेंस को कम करिया पई हो बा सिक्योरिटी प्रोवाइड करिया पई हो बिना लॉ रे बा बिना लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर रे बिना लॉ फॉर्मुलेशन रे कोनोसी कंट्री ग्रोथ करि परिबो नाही फॉर एग्जांपल जदि मु कहिबी जम्मू काश्मीर रे कोन प्रॉब्लम दिस द डिस्टर्ब्ड रीजन जोटी आप्सपा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इंप्लीमेंट होची कोन कहली जोटी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इंप्लीमेंट होतला बा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बा वर्ल्ड रो अलगा डिस्टर्ब रीजन देखंतु लाइक इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान जोटी तालिबान मानकर राजनीति चली सो एठी रेट ऑफ ग्रोथ ता कमी जाय काहे कि ना बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज सिक्योरिटी कंसर्न अधिक रुए वायलेंस अधिक रुए सेतबे हमको कोन आवश्यकता पड़े ना लॉ रो आवश्यकता पड़े जे गोटे कंट्री को स्टेबलाइज करि के रखे now law by legislative factor whether it is economic factor or not economic factor किया आसीबो कहली लाइक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मु कहितन जदी लैंड लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी ये सब होइगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने आसीबो बट एठी देखंतु लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर जोटा हम देखुचे आइडियल लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एटा ग्रोथ पे दरकार की दरकार नहीं आंसर इज यस इट इज रिक्वायर्ड whether it is economic factor or non economic factor it is non economic factor it is non economic factor then collection of natural resource now natural resource आजिर क्लास रे डिस्कशन करथि मते कोंतु नेचुरल रिसोर्स ता इकोनॉमिक फैक्टर ना नॉन इकोनॉमिक फैक्टर दिस नेचुरल रिसोर्स दिस इज इकोनॉमिक फैक्टर और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर समझते कोंतु so resource is economics is all about resources because we have limited resource or we have scarce resource jette kam rahebo resource economics is all about distribution and allocation of that resource so it is a factor and it is economic factor eta co factor and this is the economic factor then next is growth of overall population in course of time growth of overall population ye population ka kotha कहते now population is a human resource now human resource is also economic factor this is also economic factor then is capital accumulation so capital कोन ना एटी जो amount ता investment होची याको में कोडी पढितले ना it belongs to factor of production
जेहेतु एटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बिलोंग करूची दिस इज अ इकोनॉमिक फैक्टर एज वेल दिस इज इकोनॉमिक फैक्टर एज वेल हैला ताले व्हाट इज द करेक्ट आंसर 1 2 3 4 भितरु which is non economic factor question कोची which is non economic factor ताले what is the correct answer correct answer ताले किए ना ideal legislative structure बुझेला this is non economic factor population is an economic factor now how Nitish because population is human resource now resource रो गोटे branch होची human resource let's say मु कहिबी हम पाखरे resource अछि iron ore ये गोटे natural resource in the same way population is a resource for us जहाँ हम इंडिया रे कहउचे demographic dividend 50 नु 64 बा 65 एज भितरे अधिक लोक इंडिया रे अछन that's why India is known as youngistan youngistan रो अर्थ कोन ना हम एटी youth population को अधिक यूज करछि more the youth population more is the production so more the production more is the national income and hence more is the per capita income and hence more is the per capita income so एठी हम कोन देखिले ताले non economic factor के ना ideal legislative structure कोन पढिले एठी ना ideal legislative structure clear ना कहा को डाउट अछि जदि डाउट अछि कोन आगो बुझिबा ताले बुझी पारछन समस्त क्लियर क्लैरिटी आसुची समस्तंकर हां कि नहीं बुझी होची कि नहीं सो क्वेश्चन आंसर थ्रू रे हमें एंटायर इकोनॉमिक्स को रिवीजन करबा तापर हम देखबा ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी ट्रिपल पी एकु नै कि ये कोन ये कांसेप्ट ता बहुत जगह रे अछि इकोनॉमिक्स रे ये होची परचेजिंग पावर पैरिटी आकु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोली मध्ये कुहा जाय गवर्नेंस पढिला बेले देखिबे आ गोटे टर्म भी अछि आकु नै कि कोन ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एटा कोठी गवर्नेंस रे बा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे ये टर्मिनोलॉजी को यूज करा जाय था एठी पीपीपी अर्थ कोन ना एठी इकोनॉमिक्स रे एटा होची परचेजिंग पावर पैरिटी बुझेला परचेजिंग पावर पैरिटी कोन नीतीश को जो सेशन टिके शेयर हो ठीक अछि शेयर हो to get maximum benefit out of this session समस्त याको शेयर करि परिबे अन्य मानक सहित so that other learners they will also join with us समस्त हम सहित जॉइन करिवे समस्त जॉइन करिवे हम सहित या थ्रू रे हमें इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करिवा पूरा इकोनॉमिक्स पढिवा आराम सीरीज रे मु बहुत इंसो डिस्कशन करथि आराम सीरीज रे बहुत इंसो पढाइथि ये सीरीज रे हमें प्रैक्टिस करिवा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिवा सो ये कोन कहउछि ना परचेजिंग पावर पैरिटी कोन होउछि एटी परचेजिंग पावर पैरिटी रे ये कहउछि theory that tells us the exchange rate between currencies are in equilibrium when their purchasing power is the same in both countries gdp divided by exchange rate measure of income inequality measure of infant mortality in developing countries measure of infant mortality in developing countries ये देखिला पर ही बहुत गोटे जिंस समस्त एलिमिनेट करि परथिबे जो मानक पाखरे बेसिक नॉलेज अछि जो माने अल्प पढितंती भी से माने देखिला पर एतरु एगो डिस्क्रिमिनेट करि परिबे कोन तो समस्त को पॉइंट कटि जीव प्रथमे काटि दियन जो पॉइंट कटि जीव जोडा के एलिमिनेट हे जीव ताको प्रथमे काटि दियन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रा या सहित किछि संपर्क नाही तो डी टा को हमें काटि दबा इनकम इनइक्वालिटी सहित किछि रिलेशन नाही इनकम इनइक्वालिटी सहित किछि रिलेशन नाही ना आउ रहिला दीटा ऑप्शन ए आउ बी को जीडीपी डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट तो पढिबा हमें पढिथिले एक्सचेंज रेट रे केमती गोटे $1 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीस केमती एटा पांचटा इंपोर्टेंट करेंसी बास्केट को नेकेटा केमती डिसाइड होतला तापर हम डिस्कशन करथिले सो ये कहउची मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी नाही एटी देन जीडीपी डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट वाला एटा नै तला गोटे बळिला एटा देखिबा एटा केमती आर आंसर ट्रिपल पी रे बेसिकली कोन हुई परचेजिंग पावर पैरिटी रे कोन हुई लेट्स से मो पाखरे 500 रुपीस अछि से 500 रुपीस को नेकी मु इंडिया रे कोन परचेस करि पारुची एंड साइमल्टेनियसली मु अमेरिका रे कोन परचेस करि पारुची ताको डॉलर को कन्वर्ट कर दियो 500 को से सेम 500 रुपीस नेकी मु देखिबी कोठी
ना अमेरिका रे हम कोन परचेज करि पाउछ सेटा को हम कंपैरिजन करूचे ता कोच हम पीपीपी ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी सो एटा को कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स बा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हिसाब रे यूज करा जायता है दीटा कंट्री रो परचेजिंग पावर को मेजर करिया पई देन व्हाट इज परचेजिंग पावर होची कस्टमर इतो परचेज करूची सेम टंका रे सेतिकी टंका रे मु इंडिया रे कोन परचेज करि परिबी अमेरिका रे कोन परचेज करि परिबी श्रीलंका रे कोन परचेज करि परिबी लेट्स टेक एन एग्जांपल चलो गोटे एग्जांपल थ्रू हम एटे बुझिबा लेट्स से हम नेले 80 रुपीस नउची अप्रोक्सीमेटली लेट्स से दिस इज यूएस $1 अप्रोक्सीमेटली $1 सेम 80 रुपीस को यदि हम नेपाली रुपीस रे कन्वर्ट करिबा एनपीआर रे यदि को कन्वर्ट करिबा एटा केते हि जिवो होई परिबे कि केते हि जिवो केते हि जिवो एटा हि जिवो 128 रुपीस नेपाली रुपीस केते ना 128 हि जिवो हैला यदि याको बांग्लादेशी करेंसी रे बांग्लादेशी टाका रे हम कन्वर्ट करिया ताले एटा केते हि जिवो एटा हि जिवो 104 टका तांको टका रे सेम 83 मु अप्रोक्सीमेट नेली सहज करिया पई हिसाब को सहज करिया पई नै छला सो एटी देखो $1 80 रुपीस नेपाल को नै गले सेम 80 रुपीस केते जाउती नेपाली करेंसी रे 128 नेपाली टका बांग्लादेश को नै गले केते जाउती ना 104 केमती ई हिसाबटा कोन 100 टका इंडिया रो 100 टका नेपाल रो केते टका 160 टका मन रखिबे बांग्लादेश रो एटा केते टका बांग्लादेश रो 130 टका केते 130 टका ता माने 100 टका नेले नेपाल रे 160 टका देखो और रेड कलर देखा जाउनी आर्यन ब्लैक ऊपर रेड देखा जाउनी इज इट लिजिबल समस्त देखि पारुचंदी समस्त को देखा जाउची जहां लिखुची ना देखा जाउनी बांग्लादेश रे कहले एटा केतना 130 टका नेपाल रे एटा केतना 160 टका यदि हम पळौचे कोठी की यूएसए को नै जाउचे एटा केते जीवो ना अप्रोक्सीमेटली 1.25 यूएस डॉलर approximately 1.25 US dollar now this is the difference एरे कोन देखले this is the difference so एई वे रे सेति की टंका रे हम कोन परचेज करि परतो सेटा को देखु जे जोटी अपन को परचेजिंग पावर पैरिटी या पर डिस्कशन करबा तो आगो क्लास आसीबो पीपी के ऊपर आहुरी अनेक पॉइंट मु पढे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा हमें आदम स्मिथ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आदम स्मिथ कौन को देखटी आदम स्मिथ एडवोकेटेड फॉर लासेस फेयर इनविजिबल हैंड फ्री ट्रेड पॉलिसी कॉम्पिटिटिव मार्केट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ए बी सी डी विथ 1 and 2 2 and 3 1 2 3 1 2 3 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एथिरे ए गोटे क्वेश्चन ने बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट अछि बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट अछि एथिरे आदम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हां कि नहीं आदम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यस और नो गोटे पर गोटे बुझिबा देखो एटी प्रथम ऑप्शन कहूची लासेस फेयर रो अर्थ कोन के मते कहि परिबे लासेस फेयर रो अर्थ कोन के कहिबे क्विक एनी आंसर लासेस फेयर रो अर्थ होची नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट कोन कहली नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट माने की एठी स्टेट रो अर्थ होची गवर्नमेंट ता माने एठी गवर्नमेंट इंटरफेयर करिवो नाही ताले को रेगुलेट की करिवो सो इट इज रेगुलेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर की रेगुलेट करिवो कहली इट इज रेगुलेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर बुझेला ताले आदम स्मिथ कहा ऊपर कहले आदम स्मिथ प्राइवेट सेक्टर को फोकस कले ना गवर्नमेंट सेक्टर को फोकस कले समस्त जानिथिबे आदम स्मिथ एडवोकेटेड फॉर कैपिटलिज्म
he advocated for capitalism. Capitalism रे कौन हुए ना capitalism रे importance दिया जाए कहा को ना importance दिया जाए private sector को कहा को ना only private sector. So इटी कहा को importance दिया जाए ना only customer no citizen. Customer को इटी importance दिया जाए कि नहीं. ताहले first option laissez faire non interference of the state, true or false? Non interference of the state by government इटी interfere करिवनी एटा true ना false? Laissez faire अर्थ होची non interference of the state. So Adam Smith advocated for non interference, true or false? Yes, true. समस्त everyone समस्त कहंतु true कि नहीं? Yes, it is true, correct. So laissez faire first option वाला. The invisible hand कहले हम कोन बुझुचे एटी invisible hand टा कोन ना invisible hand होची एटी market force. कोन एटी invisible hand is the market force रे कोन होची मार्केट फोर्स कहले हम कोन बुझुचे ये कुछ प्राइस डिटरमाइन करिवो मार्केट फोर्स. कोलगेट आ क्लोजअप रो एग्जांपल नैथिली मने अछि कि नै समस्त कोन 100 ग्राम कोलगेट को 100 टंका 100 ग्राम क्लोजअप रो दाम केते हबो ये कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करिवार आवश्यकता नहीं. लेट इट बी डिसाइडेड इन द मार्केट फोर्स रे डिसाइड हो उतरे डिसाइड हो ना ये मार्केट फोर्स रे डिसाइड हो. एटा कोच हम इनविजिबल हैंड एठी केही रेगुलेट करिवार किछि आवश्यकता नाही. सो 1 आउट 2 देखिला हम एटाला मार्केट फोर्स. कैपिटलिज्म बा प्राइवेट सेक्टर ता केमति रेगुलेट हुए दैट इज रेगुलेटेड बाय द मार्केट फोर्स. तापर हम देखिला नेक्स्ट इज फ्री ट्रेड पॉलिसी रे कोन हुई ना दीटा कंट्री ये ओपन इकोनॉमी रो कथा कहूची ओ कथा कहूची ना इट टॉक्स अबाउट ओपन इकोनॉमी रे कोन हबो राइट अलाउज export and import. I allows export and import. तमने गोटे कंट्री आउ गोटे कंट्री सहित एटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करि परिबो बट ट्रेड इज अलाउड. फॉरेन ट्रेड इज अलाउड. कोन कहली एटी फॉरेन ट्रेड इज अलाउड. येला फ्री ट्रेड पॉलिसी. दा कॉम्पिटिटिव मार्केट कंपटीशन ले कोन होची कैपिटलिज्म बा प्राइवेट सेक्टर जेतोल एग्जिस्ट करूची मते कोन देयर इज कंपटीशन और नॉट बिटवीन बोथ द कंपनीज. दीटा कंपनी कोलगेट और क्लोजअप से कम्पीट करूचंती कि नहीं निज निज सहित. कोलगेट और क्लोजअप से माने निज सहित कम्पीट करूचंती कि नहीं इनकम बढ़िया पे. आंसर इज यस. इनकम बढ़िया पे से माने कोन करूचंती ना कम्पीट करूचंती. दे आर कम्पीटिंग विथ ईच अदर. तो कोन कहले ना कॉम्पिटिटिव मार्केट अछि कि नहीं कैपिटलिज्म रे. आंसर इज यस इट इज आल्सो देयर. ताले कोन होबे थ्रू आंसर मते बे को ताले द क्वेश्चन आसुची Adam Smith advocated for laissez-faire, invisible hand, free trade policy, competitive market. What is the correct answer? या भीतर प्राइवेट सेक्टर मतलब कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करूची. कैपिटलिज्म जेतोल एग्जिस्ट करूची कि चारटा भीतर कोन एग्जिस्ट करी मते कोन ये चारिटा भीतर कोन एग्जिस्ट करी मते कोन जल्दी. बहुत सिंपल क्वेश्चन समस्त कहि परिबे. ऑल ऑफ दिस कि नहीं कैपिटलिज्म में कोन होची नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट. यस नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट होची काहे कि ना एटी केवल प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर करियो हम कहली प्राइवेट सेक्टर ओनली इंटरफेयर करियो. सो नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. इनविजिबल हैंड अर्थ मार्केट फोर्स. फ्री ट्रेड पॉलिसी अर्थ ओपन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलाउड. कॉम्पिटिटिव मार्केट यस इट इज देयर. ताले कोन व्हाट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज डी. करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा. What was the policy of British rulers in India for industrialization? What was the policy of British rulers in India for industrialization? एठी ना हमको दीटा कांसेप्ट बुझिबा दरकार समस्त बुझिबे. गोटे हला इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन आ गोटेला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन. इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन ना इंडस्ट्री बढ़ीबा इंक्रीज इन इंडस्ट्री सेटा ला इंडस्ट्रियलाइजेशन. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन ना डिक्रीज इन इंडस्ट्री तक हम कहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन.
सो ये कहूँ कौन ना व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री को बढ़िया ପାଇଁ ब्रिटिशर मानकर पॉलिसी कौन थिला चारिटा ऑप्शन को टिके एग्जामिन करिया गोटे पर गोटे बुझिया फर्स्ट ऑप्शन the British rulers wanted to make India an importer of both primary and finished goods primary goods टा किए ना primary goods होची raw material किए primary goods होची raw material finished goods किए ना final outcome जहां हमको मिलुची सेटा ला finished goods second option कौन कहूची ना British rulers wanted to make India exporter of both primary and finished goods ये कहूची इंडिया एक्सपोर्ट करिवो कोठी कि ना फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करिवो कोन ना रॉ मटेरियल भी करिवो फिनिश्ड गुड्स भी करिवो थर्ड ऑप्शन कहूची ब्रिटिश रूलर्स वांटेड टू मेक इंडिया एन इंपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू ब्रिटेन एक्सपोर्ट करिया फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन रु आनिबा हमें रॉ मटेरियल थर्ड ऑप्शन कहूची फोर्थ ऑप्शन कहूची British rulers wanted to make India an exporter of primary goods to Britain and import finished goods from Britain. ब्रिटेन को प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट करिवा एवं ब्रिटेन रु इंडिया को फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करिवा एया कुछ ये चारिटा ऑप्शन नु कोटा ट्रू ब्रिटिशर माने कोन चाहुतले इंडिया रे को टाइप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होवा दरकार बोली ब्रिटिशर माने चाहुतले समस्त ए क्वेश्चन कहि परिबे म तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर डिस्कशन करती जदि पढाई इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढेला बेले आराम सेशन कथा कहूची आराम सीरीज रे सेठी डिस्कशन करछि ताले मते कोन ए बी सी डी भीतर व्हाट इज द करेक्ट आंसर एग्जैक्टली ब्रिटिशर माने कोन चाहुतले मते कोन गोटे पॉइंट पर हम डिस्कशन करथि लेखंतु सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाट इज द कांसेप्ट हियर इज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखि दिउ कांसेप्ट एठी कोन ना सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सो एठी कोन होची ना नंबर ऑफ इंडस्ट्री को इंडिया रे रिड्यूस करबे रिड्यूसिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया दीटा वे रे सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मान करिया पय चाहू दीटा कारण पय को कारण ना प्रथम कारण होची export finished goods to India export finished goods to India सेमानकर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रथम हेतिला सो जेहेतु इंडस्ट्रियलाइजेशन से कंट्री मानकर प्रथम हेतिला सेमाने कोन करिवे प्रोडक्शन अधिक ताको बिक्री कोठी करिवे गोटे मार्केट दरकार सो इंडिया को बिक्री करिवे at high cost सेकंड कोन करिवे ना इंपोर्ट करिवे import raw materials from India रो नेबे raw material केते ना at a cheap cost कम टंका रे इंडिया रो raw material नेबे कम टंका रे इंडिया रॉ मटेरियल लेला पर ताको फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन करिवे प्रोडक्शन कला पर पुनी ताको इंडिया को बिक्री कर देबे कोन करबे ना इंडिया को बिक्री कर देबे एट अ हायर रेट इति दीटा पॉइंट आमे पढिले गोटेला एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड्स एंड एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड्स एंड इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया ये मेथड को हमें कौन कहला दिस मेथड इज कॉल्ड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तने बर्तमान कम बैक टू द क्वेश्चन ये क्वेश्चन आंसर में समस्त करि परिबे एबे कोन व्हाट इज द करेक्ट आंसर एबे कोन व्हाट इज द करेक्ट आंसर एबे कोन हो आंसर है क्विक कौन हम एबीसीडी भितर बहुत सिंपल एटा कहली एक्सपोर्ट करिवे कोन ना एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स बा रॉ मटेरियल ये पॉइंट देखो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स बा रॉ मटेरियल देन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स and what is the correct answer yes correct answer is D correct answer कौन हबो correct answer is D
नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा what was one of the major contribution of Britishers to Indian economy? Major contribution of Britishers to Indian economy. बहुत important question. First option, the British rule in India saw the construction of several all-weather roads. All-weather road ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷ ଯାକ ଯୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ. The British rule in India saw the introduction of railway network. The British rule in India saw the development of inland trade and sea lanes. Which of the following true? Which of the following are true? ब्रिटिशर मानक समय रे हमको किसी जगह रेलवे लाइन देखिया पई मिलिथिला. कौन देखिया को मिलिथिला ना रेलवे लाइन देखिया पई मिलिथिला. So what is the correct answer? बुझी पाले समझते ना डाउट? Any doubt on this? ठीक अच्छे समस्ते बी, प्रियत बी, पिहू बी, आर्यन बी, देवाशिष बी. बहुत बढ़िया. Next, which of the following sectors was the major contributor to GDP during British rule in India? During British rule time period रे GDP को major contributor को sector थिला. Primary, secondary, tertiary, none of this. So primary sector रे हमें कौन देखुतिले ना primary sector is about agriculture and allied agriculture. This is about agriculture and allied agriculture. Secondary sector रे हमें कौन देखुतिले ना एटा होची manufacturing sector बा industry. Tertiary टा कौन? Tertiary टा होची service sector. Tertiary टा कौन? Service sector. कौन बताला आंसर? Which sector was the maximum contributor to GDP? समस्त एटा कहि परिबे. बहुत सिंपल क्वेश्चन. देवाशिष प्राइमरी सेक्टर. अन्य माने बी सेकेंडरी सेक्टर. देखो ए दीटा सेक्टर ना से समय एते अधिक एग्जिस्ट करनथले सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर. वो सेक्टर थिला ना ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर वाज देयर. ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर वाज देयर. सो ब्रिटिशर मानक टाइम पीरियड रे प्राइमरी सेक्टर जदि हम देखिबा इट वाज कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम टू द टोटल जीडीपी. अच्छा जदि वर्तमान एक क्वेश्चन आसे कि वर्तमान कोडा जीडीपी को अधिक कंट्रीब्यूट करूची. सेम क्वेश्चन जदि आसिला ड्यूरिंग वर्तमान टाइम पीरियड रे ड्यूरिंग 2024 ताले कोन हो आंसर? ताले आंसर कोन हो? क्विक. वर्तमान हेले सर्विस सेक्टर. वर्तमान हेले सर्विस सेक्टर.
नेक्स्ट पॉइंट को जीवा which of the following statement is an accurate description of the Indian economy on the eve of independence? Which of the following statements is an accurate description of the Indian economy on the eve of independence? India was a net exporter of capital goods on the eve of independence. माने कि को टाइम पीरियड रे ना during 1947. During 1947, India was net exporter of capital goods, net exporter of primary products, net exporter of industrial products, net exporter of agricultural goods. को प्रोडक्ट को इंडिया एक्सपोर्ट करूथिला 1947 रे जेतबे इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला को प्रोडक्ट को आवितर एक्सपोर्ट करूथिला इंडिया मैक्सिमम जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्विक समस्त कहि परिबे बहुत सिंपल क्वेश्चन बी और डी बी और डी कौन गोटे ही हम आंसर ए बी सी डी भीतर गोटे ही हम बेसिकली इंडिया कौन एक्सपोर्ट करूला कैपिटल गुड्स तो हम पाखे नथिला बड़ बड़ मशीन गुड़ाक नथिला जहाँ कैपिटल गुड्स माने कौन जहाँ को यूज करके आउ किछि प्रोडक्ट तैयारी करा दे परिबो प्राइमरी प्रोडक्ट कहले कौन रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करूले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नथिला एग्रीकल्चरल गुड्स मध्य नथिला एग्रीकल्चरल गुड्स को हम इंपोर्ट करूले कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करूले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को मध्य इंपोर्ट करिया पे पड़ुला बाहर कंट्री मगेया पड़ुला बट प्राइमरी प्रोडक्ट ये जो पार्ट टा देखुचंदी एटी प्राइमरी प्रोडक्ट एटा कोन ना दिस इज योर रॉ मटेरियल एटा कोन एटा ना रॉ मटेरियल ए रॉ मटेरियल तो हम कोन करथले ना एटा को हम एक्सपोर्ट करथले एटा को एक्सपोर्ट करथले देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज बी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा which of the following statement reflects condition of agricultural sector in India during British rule? Condition of agro sector in India during British rule. समस्त एटा करि परिबे करन देखिए गोटे गोटे ऑप्शन देखो द एग्रीकल्चरल सेक्टर एक्सपीरियंस ह्यूज स्टैग्नेशन एंड डेटोरिएशन बिकॉज ऑफ ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ एग्रीकल्चर सेक्टर रे हमको स्टैग्नेशन देखिया पय मिलिला बिकॉज ऑफ इंडियाज ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ सेकंड एग्रीकल्चरल सेक्टर एक्सपीरियंस्ड ह्यूज स्टैग्नेशन एंड डेटोरिएशन बिकॉज ऑफ द लैंड टेन्योर सिस्टम agricultural sector experienced huge stagnation and deterioration because of the decline of handicrafts. What is the correct answer? First option देखिले एटा जो कहूची experience huge stagnation and deterioration because of drain of wealth. Yes, drain of wealth was there. Drain of wealth India ru wealth drain हेतिला foreign country. Agreed. हां कि नहीं? Second option देखो ये कहूची अच्छा इंडिया रू drain wealth हैला बोली एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर कोन इंपैक्ट पड़ला इंडिया रू drain of wealth हैला बोली एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर कोन इंपैक्ट पड़ला सेकेंड ऑप्शन कहूची कि this deterioration is because of land tenure system
लैंड टेन्योर सिस्टम जो गुडा एठी जमींदारी सिस्टम महालवाड़ी सिस्टम राउतवाड़ी सिस्टम एगुडा थिला ई पार्ट ठीक अछि कि नहीं लैंड टेन्योर सिस्टम रो इंपैक्ट पड़िला को इंपैक्ट ना नेगेटिव इंपैक्ट पड़िला यार नेगेटिव इंपैक्ट पड़िला कहां पर ना एंटायरली ऑन एंटायर एग्रीकल्चरल सिस्टम ऊपर एंटायर एग्रीकल्चरल सिस्टम ऊपर यार इंपैक्ट पड़िला लैंड टेन्योर सिस्टम पई ड्रेन ऑफ वेल्थ थिला ड्रेन ऑफ वेल्थ पई एंटायर इकोनॉमी ऊपर इंपैक्ट पड़िला एंटायर इकोनॉमी ऊपर इंपैक्ट पड़िला एग्रीकल्चर पई जदि हमें देखिबा दिस वाज बिकॉज ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम ताले करेक्ट आंसर कोन करेक्ट आंसर इज बी क्लियर समझते एवरीवन क्लियर एवरीवन क्लियर next question which of the following is characteristics of people below the poverty line it means bpl ले जो माने अछंती below the poverty line ने जो माने अछंती ये कुछ समानकर कोन characteristics बुझी होची जत्ते के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करलेनी समस्त बुझी पारछंती ना नहीं कार डाउट अछि जत्ते के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करलेनी समस्त बुझी पारछंती ना कहा को असुविधा होची बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया ताले क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन कोन होबा भीतर ना डेट ट्रैप यस और नो जो माने बिलो द पॉवर्टी लाइन से माने लोन नेबे लोन नेला परे ताको रिटर्न करि परिबेनी नो रीपेमेंट और हमें एटी कहबा रीपेमेंट बर्डन कहार ना बोथ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट बोथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दीटा जाकर इंपैक्ट मान ऊपर पड़ुछ सो ये कौन करछ इट लीड्स टू डेट ट्रैप ये कौन करछ ये लोन भीतर ही रह जाउछन डेट ट्रैप भीतर रह जाउछ ता भीतर बाहर को स्पोन देन जेंडर इनइक्वालिटी माने हम देखिबा who are mostly suffering from poverty line हाँ जगन्नाथ आई एम कमिंग टू योर पॉइंट जेंडर इनइक्वालिटी रे केमती प्रॉब्लम आसे नाउ मते जदि को जेंडर वाइज हमें बीपीएल कैटेगरी देखिबा ताले अधिक मेल दे आर सफरिंग फ्रॉम बीपीएल और मोर फीमेल मेल ना फीमेल को माने अधिक बिलो द पॉवर्टी लाइन न अछंती ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर यदि हम देखिबा देन दिस इज फीमेल काहे कि ना इनकम इज लो बा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कौन कौन कहली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दिस इज आल्सो लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कौन यहाँ पर पूरा डिस्कशन पूरा क्लास नहीं हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस रे हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस रे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ने इंपैक्ट कौन पड़ुची तापर हम पूरा पढै छी एई देखि चंदी से क्लास एनीवन फॉलोइंग एडिटोरियल एनालिसिस सेशन एनीवन हियर फॉलोइंग एडिटोरियल एनालिसिस सेशन ही फॉलो करू चंदी प्रत्येक संडे एटा आसुची 11 टा बेले Sunday at 11 AM OPSC वाला चैनल ले हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस अपलोड होची समस्त याको देखि परिबे प्लेलिस्ट को जाई कि चैनल लो प्लेलिस्ट जाई कि समस्त चेक करि परिबे कि एडिटोरियल एनालिसिस वीकली एडिटोरियल एनालिसिस गोटे प्लेलिस्ट भीतर गोटे पाइबे ता भीतर प्रत्येक सप्ताह रो मंडे रु सैटरडे भीतर जहा जहा आसुची ताको संडे मु डिस्कस करू के देखि चंदी याको ना के देखि नांदी no one followed as of now available completely free of cost it available अच्छे चैनल ले समस्त देखिबे सेठी मेंस पई विभिन्न प्रकार रा क्वेश्चन डिस्कशन करा जाउची आंसर राइटिंग सहित इश्यू एनालिसिस केमति करिवे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट टा फीमेल मानक पई कोन हुई ना लो हुई
So gender inequality also it is a cause of BPL, below the poverty line. Then poor health, yes poor health मध्ये देखिବାକୁ मिले काहेकि जेते बगर इनकम नाही तार एक्सपेंडिचर मध्ये नाही ये भी देखिनो जगन्नाथ देखिनो आर्यन देखिनो सागरिका देखिनो पीयू देखिनो ठीक अछि नो प्रॉब्लम जदि न देखि जने वर्तमान समस्त जाई के देखि पारि हैला इकोनॉमिक्स रो भी गोटे क्लास आसे देखिबे वन शॉट सीरीज रा क्लास जोतरे गोटे लॉन्ग ड्यूरेशन रा क्लास एंटायर इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स मु कवर करिछि 7.5 आवर रा क्लास 7.5 घंटा रा क्लास जोतरे पाखा पाखी इकोनॉमिक्स रो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करछि आउ रहला फाइनेंशियल पार्ट जहा जहा अछि से सब मध्ये कवर करी वन शॉट सीरीज रे जेंति बजट हे गला इकोनॉमिक सर्वे हे गला देन योर फॉरेन ट्रेड बा एक्सटर्नल ट्रेड हे गला कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सब कवर करी आ गोटे क्लास 7 घंटा रा क्लास देखिबे 7.5 घंटा रा क्लास अछि इकोनॉमिक्स ता बाद एटा कहली कोडा संडे 11 रे वीकली एडिटोरियल एनालिसिस अपलोड होची समस्त से क्लास को देखिबे इट इज अवेलेबल ए चैनल ले क्लास पर समस्त जाय देख पारे सो एटी देखिला हम कोन ना बीपीएल ले पोर हेल्थ जेंडर इनइक्वालिटी डेट ट्रैप ये तीनटा जाको ऑल ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन हां कि नहीं सागरिका यस इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स फ्री रे अवेलेबल अछि YouTube रे देखंतु 7.5 घंटा रा क्लास तार पार्ट 2 मध्ये आसीबो पार्ट 2 आसीची पार्ट 2 भी आसीबो पार्ट 1 आसीची डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स सब कवर करिची बेसिक कांसेप्ट्स डिमांड सप्लाई ग्रोथ डेवलपमेंट हैप्पीनेस प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट सब कवर करिची नेक्स्ट क्लास जेतेबेला आनिबी सेतिरे रखिबी कोन रखिबी व्हाट इज योर डिमांड नेक्स्ट वन शॉट रे कोन रखिबा कोन डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड नेक्स्ट क्लास में देबी मु प्लान करिची नेक्स्ट क्लास रे रखिबा पई बजट देन योर फॉरेन ट्रेड इंडस्ट्री जहां फाइनेंशियल पार्ट रहला मनी मार्केट कैपिटल मार्केट ए जिंस मनी मार्केट कैपिटल मार्केट ये सब रखिची नेक्स्ट टारगेट मते कोन एते गोटे क्लास पाउछन ये सब बेनिफिट होउची ना होउची हेल्पफुल वेदर इट इज हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन और नॉट whether it is helpful or for your preparation or not समस्त को प्रिपरेशन को ये सहज करूची ना करू एबे एमसीक्यू सेशन चलेची पुणी आ गोटे क्लास आसीबो सेम 7-8 घंटा रा क्लास पूरा इकोनॉमिक्स कवर हेतिबो सेते एडिटोरियल क्लास प्रत्येक सप्ताह रे आसुची एटा मेंस पाई ओसीएस मेंस पाई एक्सक्लूसिवली जगन्नाथ एब्सोल्युटली हेल्पफुल बहुत बढ़िया थैंक यू वेरी मच बहुत बढ़िया समस्त जहां जे कहउछन समस्त कमेंट माध्यम रे लिखिबे प्रत्येक क्लास पर कमेंट रे लिखिबे कि वेदर इट इज हेल्पफुल और नॉट प्रत्येक क्लास रो जो मान को हेल्पफुल हो जदी हेल्पफुल हो नी नो प्रॉब्लम विल बी ट्रांसपेरेंट फॉर द फीडबैक जो मान को हेल्पफुल हो नी लिखिबे हेल्पफुल हो नी जदी जो मान को हेल्पफुल हो छि ताले डेफिनेटली लिखंतु कि हां ई सेशन टा ई पोर्शन हमको हेल्पफुल हला है बहुत परिश्रम करके करा जाउछि समस्त ये क्लास समस्त यार बेनिफिट उठांतु परीक्षा दियंतु परीक्षा क्रैक करन सो दैट इज द बेस्ट रिजल्ट दैट वी कैन एक्सपेक्ट समस्त एडिटोरियल एनालिसिस क्लास करिवे वन शॉट क्लास करिवे कंटीन्यूअस क्लास रे पूरा इकोनॉमिक्स को पढ़ी के सारिवे एंड जदि किछि डाउट आसे कमेंट थ्रू रे जणाइबे केमति लागिला क्लास ताको मध्ये कमेंट थ्रू रे जणाइबे ये क्वेश्चन को आसीबा people below the poverty line tell तीनटा पॉइंट कौन कहली को पॉइंट इट इंक्लूड हबो ना डेट ट्रैप देवाशीष को जो प्लीज कम टू द क्वेश्चन सर क्वेश्चन तो ओपन अछि आंसर कर ई सीरीज गुडा को विषय न कहले बहुत जण जानि पर नांती बहुत जण से क्लास तो करि पर सो इट इज बेटर टू डिस्कस सो दैट इजीली समस्त से क्लास तो करि परिबे बुझ पाले सो टी तीनटा पॉइंट हम देखले डेट ट्रैप जेंडर इनइक्वालिटी पोर हेल्थ और डेट ट्रैप तीनटा जाको ऑल ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिलो द पॉवर्टी लाइन सो आको काहे की कहूची से क्लास सहित मिसई की करिया पई सो दैट सेटी कांसेप्ट डिस्कशन नै छी आ एटी हम एमसीक्यू डिस्कस करते एमसीक्यू कांसेप्ट दिते भीतर सिंक रहइबो से क्लास तो कला पर कांसेप्ट बुझी परिबे एटी एटा को प्रैक्टिस कला पर एमसीक्यू करि परिबे
सो सिंक करि परबे दीटा जिंस अदरवाइज का लागुथिबो कि नै मु एठी खाली एमसीक्यू करूची आ मोर कांसेप्ट मिस हे गला जगन्नाथ कहते योर एक्सपेक्टेशंस नेवर गोज ओल्ड वर्स्ट बहुत बढ़िया लिखछ वेरी मच हैप्पी नो प्रॉब्लम मिस्टेक एठी हो बट परीक्षा रे न हो आमे भगवान को डाकुचे कि समस्त जेमति जेते जण हमर लर्नर अछंदी समस्त परीक्षा क्वालिफाई करिवे ओसीएस एग्जामिनेशन जेमति समस्त क्वालिफाई करिवे so this is the best expectation that we can have ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स आगो को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which of the following is the main reason behind the poor people in India getting limited economic opportunities poor people in India getting limited economic opportunities what is the reason now see this economic opportunities या पर मध्ये गोटे opportunity ऊपर मध्ये गोटे discussion अछि उतरे editorial ले देखिबे सब क्लास इंटरलिंक सब क्लास कले ही बुझी परिबे लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलले कोन हो मन कर हम कहली समस्त प्रिपरेशन कले वर्तमान परीक्षा पे प्रिपरेशन कले यू आर वेल प्रिपेयर्ड ऑप्शनल पढिले जीएस पढिले सब प्रिपेयर कले बट परीक्षा बाहर लेन एग्जाम नोटिफिकेशन बाहर लेन ताले कोन हो मते कोन दिस इज अ लॉस और नॉट दिस इज लॉस ऑफ योर टाइम लॉस ऑफ एनर्जी सब इट लॉस हला सो अपॉर्चुनिटी इज इंपोर्टेंट सी ये अपॉर्चुनिटीज को इकोनॉमी रे कुआ जाय इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी किए प्रोवाइड करिवो ना गवर्नमेंट प्रोवाइड करिवो केमते प्रोवाइड करिवो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करिवो थ्रू जॉब क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करिकी प्रोवाइड करि परिवो हैला सो ये क्वेश्चन को जे कि लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रहिले कोन हुए मेन रीजन बिहाइंड पुअर पीपल इन इंडिया दे आर गेटिंग लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अदर्स रिच पीपल दे हैव एक्सेस मन कर कहबी क्रेडिट फैसिलिटी एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इफ यू डोंट हैव एनी एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज जदी क्रेडिट फैसिलिटी न मिलिवो कौन कहली ना जदि हमको क्रेडिट फैसिलिटी न मिलिवो ताले कोन हो तो जने तो से टंकाटा को आनी कि यूटिलाइज करि परिबोनी हम कहबा खाली मुद्रा लोन तो खाली पेन पेपर रे कहले होबनी जण को मिलिवा दरकार प्रॉपर्ली तबे ताको नै कि से एंटरप्रेन्योर हो सो इंपोर्टेंट होची कोन ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ये कहूची को व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड पुअर पीपल इन इंडिया गेटिंग लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लैक ऑफ स्किल एंड बेसिक लिटरेसी scarcity of resource most of them live in a rural area none of these को कारण मानक पई समान को लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिली थाए को जण कहते लैक ऑफ स्किल एंड बेसिक लिटरेसी देखो ए पॉइंट ये जो 1 और 2 अछि ये दिगा देखो वेरी क्लोजली एसोसिएटेड मोस्ट ऑफ देम लिव इन रूरल एरिया एटा तो हबनी जानि परते समझते नॉन ऑफ दिस तो हबनी गला ए और बी ये दिगा देखो बहुत क्लोजली रिलेटेड आंसर ऑप्शन कोन कहली ए और बी क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन लैक ऑफ स्किल और बेसिक लिटरेसी पाई मध्ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेनी बिकॉज़ दे हैव लैक ऑफ नॉलेज सेमानकर नॉलेज नहीं then scarcity of resource एठी हम कोन देखुचे नाम पकरे रिसोर्स रा अवेलेबिलिटी नाही नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स सो स्कार्सिटी कहूची कोन ना नॉन अवेलेबिलिटी माने कम अछि रिसोर्स ता केते अछि ना लेस रिसोर्स इज अवेलेबल यदि लेस रिसोर्स अवेलेबल त ताको के एक्वायर कर दबो ना जहां पकरे पावर अछि पावर कहां पकरे अछि पोर ना रिच कहां पकरे पावर अछि रिच पकरे पावर अछि अधिक reach up more access तो सी प्रथम ताको कैप्चर कर दो सो रिसोर्स हम पाके स्कार्स न थांदा ताले समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल थांदा जदि हम देखियो लैंड एक्विजिशन लॉ आसला काहे कि लैंड एक्विजिशन लॉ आसला ना समस्त को पाके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज नॉट देयर लैंड कंसंट्रेशन थिला अधिक का पाके रिच पाके पोर पाके लैंड ही नहीं सेत पे हम लैंड एक्विजिशन लॉ आनले यदि हम पाके लैंड प्रचुर मात्रा थांदा जदि स्कार्सिटी न थांदा लैंड रो यदि हम पाके लैंड रो स्कार्सिटी न थांदा ताले पोर को किछ असुविधा नहीं थांदा पाखरे भी जति की संपत्ति थांदा रिच पाखरे सेति की संपत्ति थांदा ताले मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एटी कोन हो ए ना बी व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ए ना बी लैक ऑफ स्किल और बेसिक लिटरेसी एटा रिच पाखरे भी न थाई पारे बेसिक लिटरेसी रिच पाखरे रहयो बोली सेमति किछि माने नहीं स्किल रिच पाखरे रहयो बोली सेमति किछि माने नहीं lack of skill basic literacy this point is common both to the rich and the poor दी जन को एटा common a option टा common to both rich and poor but b option scarcity is exclusively for the poor यदि अधिक थांदा poor पाखरे resource बढ़ी पारि थांदा ताले what is the correct answer here the correct answer is b
correct answer is B. Clear? Next question. Dash is powerlessness, lack of representation and freedom. Who condition को हमें powerlessness बोली कहूचे, lack of representation कहूचे, lack of freedom बोली कहूचे. Confidence, freedom, poverty, employment. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समस्ते करि परिबे, कोनो से असुविधा नहीं. Confidence, poverty, freedom, employment. Confidence, poverty, freedom, employment. Quick. Powerlessness, lack of representation and freedom. को कंडीशन को हमें कहूचे. गोटे पॉइंट अच्छी मन रखिए, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेला बेले 5 रे पढ़ाई जे से क्लास करिवे, क्लास कला सेति पई मु कहूची कि क्लास करंतु, क्लास न कले बुझ परिबे. पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट रो क्लास जेतले पढ़ाई छी सेति गोटे पॉइंट मु कहितली देखिबे कि नथिंग इज मोर पेनफुल देन पॉवर्टी. कोन कहली? नथिंग इज मोर पेनफुल देन पॉवर्टी. So nothing is more painful than poverty. So poverty is the most painful phenomenon. जोटी कौन होतले ना बेसिक रिक्वायरमेंट कौन? खाद्य, वस्त्र, बासगृह, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ. फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ हमको मिलुन हैला. फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ बेसिक जिंस जोटी हमको मिलुन. आपको मैं कौन कहूचे ना दिस कंडीशन इज नोन एज पॉवर्टी. This condition is known as poverty. Clear? Next, disguised unemployment is found in is found in एगो कौन कहा जाए ना प्रच्छन्न बेकारी. समझते ये टर्म सुनिथिबे, नॉट अ वेरी न्यू वन. प्रच्छन्न बेकारी. This is found in which field? Disguised unemployment हमको को जगह देखियो एक मारे. एटी कोन हुए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रे गोटे पॉइंट मार्क करिवे. एकु मध्ये मु पढै छी अनएम्प्लॉयमेंट क्लास रे. एटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0. को क्लास रे पढै छी से 7.5 घंटा रा क्लास देखिबे वन शॉट इकोनॉमिक्स रे. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एटी केते ना 0. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कोन? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कोन गोटे उदाहरण माध्यम रे बुझिबा हमें. लेट्स से गोटे काम करिया पई हमें केतेटा वर्कर एम्प्लॉय करले ना हमें 10टा वर्कर मिले. केते दिन रे सारिबे ना से माने 8 दिन रे सारिबे. हमें कहले कि हम कामटा 5 दिन रे सरू, आउ 5टा वर्कर पढै देले, 15टा वर्कर नि आसे. किन से माने सारिले के दिन ना से 8 दिन. 10टा वर्कर सारिले 8 दिन रे, 15टा वर्कर लगेले भी से 8 दिन रे. ता माने एटी जो एक्स्ट्रा 5टा वर्कर अछंती ए माने कोन करथु? एक्स्ट्रा 5 वर्कर्स एमानकर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी केते ना 0. से माने किछि ऐड कलेनी. से माने आसितिले भी 8 दिन सरी थांता, न आसितिले भी 8 दिन रे सरीला. ता माने तांकर किछि वैल्यू नाही एटी. ताको कोआ जाय कोन ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ए जो 5 जण रहिले 5 एक्स्ट्रा वर्कर तांको कोन कोआ जाय ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैला. सो एटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0. एटा कोडी बेसिकली हमको देखा जाय को सेक्टर रे ना समस्त जानि एटा हमको एग्रीकल्चर सेक्टर रे अधिक देखा जाय. पॉइंट मार्क करके रखिबे, लेखि रखन.
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो कौन कहली देखिए रखंतु मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which of the following situation contribute to cause the inflation situation in an economy inflation situation को किए बढ़ाउछ डिमांड सप्लाई गैप एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज इन टैक्स रेट एटा समस्त कोन जे तापर मु कहबी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा ठीक है भाबी की कहबे क्विक क्विक सागरिका 1 2 शांति ऑल देवाशीष 1 and 2 शांति 1 2 देखो एटा कोन कहूची इन्फ्लेशन सिचुएशन को के बढ़ाउची इन्फ्लेशन ने हम देखले कोन होतला ना प्राइस हाइक होची नुहे कि डिमांड सप्लाई गैप डिमांड अधिक अच्छी सप्लाई कम अच्छी ताको हम कहले डिमांड सप्लाई गैप ताले एटी प्राइस बढ़िबो ना बढ़िबोनी प्राइस ता एटी इंक्रीज हबो ना नहीं यस प्राइस ता एटी कोन हबो इंक्रीज हबो yes or no first option is correct or not first option is correct or not समझते कौन तो first option here first option is correct or not quick डिमांड सप्लाई गैप पई होची इन्फ्लेशन करेक्ट सेकंड एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी ता माने मनी अवेलेबिलिटी अधिक मते को मनी अवेलेबिलिटी बढ़िले मनी अवेलेबिलिटी इंक्रीज ले डिमांड इंक्रीज होबो कि नहीं यस डिमांड इंक्रीज होबो से अनुसार सप्लाई नहीं ताले एटा कोन होबो it causes inflation or not second point it causes inflation or not yes or no yes then increase in tax rate यदि टैक्स रेट बढ़ी जाए ताहले कोन होबो टैक्स रेट जदि बढ़ी जाए को टैक्स एटा कंफर्म करिनी एक्चुअली पॉइंट डायरेक्ट टैक्स ना इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स रे इंपैक्ट अलगा इनडायरेक्ट टैक्स रे इंपैक्ट अलगा इन्फ्लेशन क्लास रे पढ़ै दिली मन थिबो ताले कोन होबो इट करेक्ट आंसर B is the correct answer मते टिके कुह ए पॉइंट को टिके आउथरे डिस्कस करियो मते को ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डायरेक्ट टैक्स कोन होबा दरकार इनडायरेक्ट टैक्स कोन होबा दरकार जल्दी को डायरेक्ट टैक्स कोन होबो कमैबा दरकार ना बढ़ैबा दरकार एवं इनडायरेक्ट टैक्स कोन होबा दरकार डायरेक्ट टैक्स कोन होबो इनडायरेक्ट टैक्स कोन होबो जल्दी को
ड्यूरिंग इन्फ्लेशन माने टू कर्व डाउन इन्फ्लेशन कौन करिया दरकार इन्फ्लेशन कमैया पे डायरेक्ट टैक्स कौन करिया दरकार डायरेक्ट टैक्स टा इंक्रीज हवा दरकार इनडायरेक्ट टैक्स टा डिक्रीज हवा दरकार एटा इंक्रीज हेले कोन होना डिमांड कमी जीवो काहे कि ना डिस्पोजेबल इनकम टा एटी कमी जीवो इनडायरेक्ट टैक्स टा को डिक्रीज कले कोन होबो ना प्राइस कमी जीवो कोन मार्केट प्राइस कमी जीवो सो प्राइस कंट्रोल हे जीवो कोन हे जीवो ना प्राइस कंट्रोल हे जीवो बुझिला जगन्नाथ कहूच जगन्नाथ बहुत बढ़िया कथा लिखिछ कि आई मीन क्लास 12 CHSC एबे टू 45 मिनिट्स ओपीसी पाई टाइम देबी ठीक ना भूल सर +2 कोर्स को 6 आवर टाइम दिए ओनली सेल्फ स्टडी नॉट बाय एनी कोचिंग सर बहुत बढ़िया 6 घंटा +2 पाई बहुत बढ़िया अछि सो यू प्रिपेयर वेल फॉर योर ऑल पेपर्स जहां भी अछि ओडिया इंग्लिश व्यतीत जहां साइंस आर्ट्स कॉमर्स जहां पढुते तक प्रिपेयर हो ता सहित सेल्फ स्टडी चालू 45 मिनिट्स जोटा हमें प्रिपेयर होचे फॉर ओपीएससी एग्जामिनेशन गुड स्ट्रेटजी एबेटू जदि 1 आवर डेली पढ़ी पढ़ी चलो ताहले +2 +3 सरीवा बेलको हमर कंप्लीट हो जाइतो पूरा सिलेबस एंड यू विल बी कंप्लीटली एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन 5 वर्ष अछि मन देकी 5 वर्ष पढंतु फर्स्ट अटेम्प्ट रे टारगेट रखिए फर्स्ट अटेम्प्ट रे ओएस क्रैक करिकी यंगेस्ट ओएस ऑफिसर रे होता यंगेस्ट ओएस ऑफिसर एट द एज ऑफ 21 एबेटू जदि प्रॉपर्ली पढुचंती डेफिनेटली 5 वर्ष परे परीक्षा क्रैक करिवे एथरे कोनोसी प्रकार संदेह नाही ठीक अछि पीयू पीयू मध्ये सेम बहुत बढ़िया सो बुझिला ए पॉइंट लेखि के रखले समझते डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कोन करिया दरकार इन्फ्लेशन समय रे इन्फ्लेशन समय रे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स रो कंडीशन कोन होबा दरकार ताले करेक्ट आंसर एटी की हला ना करेक्ट आंसर इज बी नेक्स्ट when too many fonts are hunting down too few votes the probable result of inflation is recognized as এটা केवल इंग्लिश टर्म बुझिले ये क्वेश्चन आंसर करियो बहुत सिंपल क्वेश्चन किछि नाही एथरे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल समस्त करि परिबे कोन तो सिंपल कथा कहूची ये प्राइस हाइक यार अर्थ कोन जहां लिखाई छी ये सब होची प्राइस हाइक होची प्राइस हाइक और प्राइस जेतोले इंक्रीज करूची कहारो ना किछि स्पेसिफिक प्रोडक्ट रो कहारो ना किछि स्पेसिफिक गुड्स बा किछि स्पेसिफिक प्रोडक्ट एक हमें कोन कहूचे ना कॉस्ट इंक्रीज होची सो अपोज हमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कोन कहूचे दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन when there is high inflation in the economy how will it affect the supply of money when there is high inflation in the economy how will it affect the supply of money कोन इन्फ्लेशन जो अधिक हम कौन हम मनी सप्लाई बढ़ो ना कमिबो ना किसी इंपैक्ट नहीं
इन्फ्लेशन केतेबेले हम जेतेबेले इन्फ्लेशन अर्थ कोन प्राइस इंक्रीज है प्राइस हाइक केतेबेले हम जेतेबेले मनी अवेलेबिलिटी बढ़िबो जदि हम कहबा मनी सप्लाई जेतेबेले इंक्रीज हो ताले कोन हो करेक्ट आंसर when there is increase in money supply when there is increase in money supply बुझेला समस्त क्लियर next question which of the following class will not be negatively affected by higher inflation not be negatively affected by higher inflation consumer class debtor class pensioner class business class consumer class किए ना जे consume करूची ये किए ना येला consumer debtor class किए ना जे लोन नहीं जी pensioner class किए ना जे pension पाऊची आफ्टर सर्विस business class किए ना जे business करूची production business करूची खाली बिक्री करूची कहा ऊपर इन्फ्लेशन ना इंपैक्ट पड़िबोनी किछि पेंशनर क्लास जो माने कहउछ शांति पेंशनर क्लास इज आल्सो कंज्यूमर क्लास से कंज्यूम भी करूछि त पेंशन ता तो फिक्स ना से 20000 पेंशन पाउथला 20000 पेंशन पाइबो बट इन्फ्लेशन आगुर 20000 जति की प्रोडक्ट किनुथला इन्फ्लेशन हला पर 20000 कोन से प्रोडक्ट किनि परिबो 20000 टंका रे से जति की जिंस किनुथला इन्फ्लेशन हबा आगुर इन्फ्लेशन हला पर 20000 रे से कोन सेति की जिंस किनि परिबो डेफिनेटली से ताटू कम प्रोडक्ट पाइबो हां कि नहीं कौन करिबो ना से डेफिनेटली ताटू कम पाइबो जिंस ताल तापर इंपैक्ट पड़िबो ना पड़िबोनी कंज्यूमर क्लास ऊपर इंपैक्ट पड़िबो ना नहीं कंज्यूमर क्लास ऊपर इंपैक्ट पड़िबो ना नहीं प्राइस तो बढ़ी जाउछ सो प्राइस बढ़िले तापर इंपैक्ट पड़िबो ना नहीं हम पड़िबो ताले नेगेटिवली नॉट बी नेगेटिवली अफेक्टेड कहा ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़िबोनी आ भीतर नेगेटिव इंपैक्ट या भीतर कहा ऊपर पड़िबो नहीं बिजनेस क्लास ऊपर पड़िबोनी काहे की पड़िबोनी बिजनेस क्लास ना तार इनकम बढ़िबो जेतबे इन्फ्लेशन हो जाइछि सब प्रोडक्ट रो प्राइस इंक्रीज हो जाइछि बिजनेस क्लास वाला तक बिक्री जेतबे करियो तार सेलिंग प्राइस मध्ये बढ़ी जिवो तार सेलिंग प्राइस बढ़ी जिवो सो तार प्रॉफिट मध्ये बढ़ी जिवो प्रॉफिट टा बढ़ी जिवो तो ये नेगेटिवली इंपैक्ट या पर कोन प्रकार इंपैक्ट पड़िबो नाही बिजनेस क्लास ऊपर कोनोसी प्रकार नेगेटिव इंपैक्ट एटी पड़िबो नाही बुझेला ना नहीं डाउट क्लियर आगो बुझी बात नेक्स्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इनिशिएटेड इन इंडिया रे केबे हला जा हम एलपीजी मॉडल बोली कहूचे ये इंडिया रे केबे स्टार्ट हेतला एलपीजी मॉडल इंडिया रे केबे स्टार्ट हला एटा समस्त करि परिबे बहुत सहज क्वेश्चन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऊपर ये क्वेश्चन अछि एको कोन कहा जाए एको कहा जाए ग्लोबलाइजेशन globalization it has two arms privatization and your liberalization privatization and liberalization globalization अर्थ कोन
treating the entire globe as a single market. Treating entire globe as a single market. लिबरलाइजेशन आम कौन करुचे ना इकोनॉमी को लिबरल करुचे माने लाइसेंस राज हटई दउचे लाइसेंस राज हटई दउचे प्राइवेटाइजेशन ने कौन करुचे ना हम ओपन करुचे को प्राइवेट सेक्टर को ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर कौन करचा को ना ओपन करचा को काकू ना टू द प्राइवेट सेक्टर सो एटा केबे आसिला ना 1991 आसिला समस्त जानि ताकू कौन कोआ जाय 1991 आसिला को कौन कोआ जाय ए समय प्राइम मिनिस्टर किए थिले फाइनेंस मिनिस्टर किए थिले एवं ए मॉडल को कौन कोआ जाय प्राइम मिनिस्टर किए थिले ना प्राइम मिनिस्टर थिले पीवी नरसिम्हा राव फाइनेंस मिनिस्टर किए थिले ना डॉक्टर मनमोहन सिंह सेतपे को कौन कोआ जाय ना को कोआ जाय राव सिंह मॉडल कौन कोन दिया को राव सिंह मॉडल क्लियर ना डाउट next question trade of visible items between countries is called trade of visible items दीटा कंट्री भितरे जेतेबेले ट्रेड हुए माने कर येला कंट्री ए येला कंट्री बी जेतेबेले ए कंट्री बी को जिंस दउची ता कोन कोआ जे ता कोआ जे ये एक्सपोर्ट कला जेतेबेले ए बी पाखर किछि प्रोडक्ट आनुची किनकी ता कोन कोआ जे ता कोआ जे इंपोर्ट कोन कोंती इंपोर्ट आकु शॉर्टकट रे एक्सिम बोली कोंती एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोली कोन कोन कोंती एक्सपोर्ट इंपोर्ट जेतेबेले एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए कहार हुए ना डिफरेंट गुड्स रही परिवो एवं सर्विस रही परिवो गुड्स रही परिवो एवं सर्विस रही परिवो तो गुड्स रो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होची ताको हम कहउचे दीज आर कॉल्ड विजिबल्स सर्विस गुडा को कोन ना सर्विस गुडा कहउछन इनविजिबल सर्विस गुडा को कोन ना सर्विस होचंती इनविजिबल हैला क्वेश्चन को आसा देखो क्वेश्चन कोन कहउछ कोन कहउछ देखो एटा निजे करो निजे करंत कोन एटा कोन आंसर विजिबल आइटम रो कथा कहउछ विजिबल आइटम माने कोन ना गुड्स तले कोन कहबा दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड ता माने बैलेंस ऑफ ट्रेड रे हम कोन देखुचे ना टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट कोन देखुचे ना टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट हैला सेमती जदि हम एटी गुड्स माने कि सर्विस रो एक्सपोर्ट रो इंपोर्ट को माइनस करबा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस आको कोन कहै जानि छ कहै नेट इनविजिबल्स कोन कोन दिया आपको कोन नेट इनविजिबल्स मन रहिला ना डाउट अछि next question on mixed economy next question on mixed economy
को कौन हम एटी मिक्स्ड इकोनॉमी रो डेफिनेशन simultaneous development of rural and urban sector, industrial and service sector, rural and urban poor with equal distribution of points, private and public sector simultaneously exist करे कौन हम क्विक जो इकोनॉमी पढ़ोचे आमे एतरे तीन प्रकार इकोनॉमी ऊपर मोटी डिस्कशन करथि गोटेला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ गोटेला सोशलिस्ट इकोनॉमी आ गोटेला मिक्स्ड इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रे कोन होची ना एठी डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर सोशलिस्ट इट इज बाय द गवर्नमेंट और बाय द स्टेट सेक्टर एठी के करची ना एठी करची बोथ existence of private and government sector mixed economy ताले को एटी आंसर कोन हो को existence of both public and private sector D is the correct answer कि नहीं D is the correct answer or not next BOP रे balance of payment रे which type of method is used double entry bookkeeping system single entry accrual basis cash basis system BOP रे balance of payment रे को मेथड टा यूज हुए एटा मु पढैतली मन कर मो घरे गोटे कोन कली गोटे खाता कर देले जोटी गोटे क्रेडिट एंट्री लिखिबी आ गोटे साइड रे डेबिट एंट्री लिखिबी देखिली कि घरु मु गली गोटे प्रोडक्ट मार्केट को किनिया पई 500 टंका किनि आली सो 500 टंका मु डेबिट साइड रे लिखि तो डेबिट साइड रे 500 टंका लिखि देली सेही समय रे घरु जाईची डेबिट हेईची तो 500 टंका आउटफ्लो हेईची घर को भी तो किछि आसीची ना किछि इनफ्लो भी तो हेईची ना कोन हेईची ना जो गुड्स मु किनिली मन कर वेजिटेबल किनली 500 टंका सो वेजिटेबल टा मोर कोन हला ना क्रेडिट वेजिटेबल टा मोर घर को इनफ्लो हला बा क्रेडिट हला सो मु दीटा साइमल्टेनियसली दीटा कॉलम मेंटेन करली गोटे फॉर आउटफ्लो बा क्रेडिट आ गोटे फॉर इनफ्लो बा डेबिट आ गोटे इनफ्लो बा क्रेडिट हैला सॉरी एटा उल्टा कर दे हां ठीक अछि एटा ला इनफ्लो सो गोटे जगह इनफ्लो हला आ गोटे जगह आउटफ्लो हला तमने क्रेडिट आ डेबिट कोन हला ना साइमल्टेनियसली होछ क्रेडिट होछ आ डेबिट होछ आ को डबल एंट्री बुक कीपिंग कोन कोन दिया को दिस इज नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग clear what is double entry bookkeeping सेटा BOP रे बैलेंस ऑफ पेमेंट रे हमें कोन करछे एटा को डबल एंट्री बुककीपिंग करछे next which of the following are component of BOP account following are component of balance of payment account याको डिस्कशन करिबा ये क्लास पढैतिली याको ए रेस्पेक्टिव क्लास रे पढैतिली या पर मध्ये आगो गाउरी हमर क्लास आसीबो जोटी हमें दीटा जिंस देखतिले गोटे देखतिले करेंट अकाउंट आ गोटे देखतिले हमें कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट रे कोन होतला ना वन वे ट्रांजैक्शन गुडा को रिकॉर्ड होतला एठी रे टू वे ट्रांजैक्शन गुडा को रिकॉर्ड होतला सो BOP includes both current and capital account what is the correct answer is C correct answer is C clear no doubt quick सो आज जति के पॉइंट पढिले हमें समस्त बुझी पारले ना का डाउट अछि समस्त को बुझी आसिला ना का डाउट अछि जदि मते कोन
and just 2 minutes summary मैं को टॉपिक ऊपर आज डिस्कशन कले क्वेश्चन आंसर कले miscellaneous MCQ practice MCQs on basics of economics ହେଲା types of market आउ कौन पढ़ी ना अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर क्वेश्चन कले इन्फ्लेशन ऊपर क्वेश्चन कले देन बीओपी बा फॉरेन ट्रेड ऊपर क्वेश्चन कले प्लानिंग डेवलपमेंट ग्रोथ डेवलपमेंट ऊपर मध्ये हमें क्वेश्चन कले so this is the summary of today's session समस्ते यार बेनिफिट पाइबे आई एक्सपेक्ट जेमती कहली वन शॉट क्लास करिवे इकोनॉमिक्स दिस इज अवेलेबल हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस रा क्लास करिवे पुनी आगामी सेशन मानकर मध्ये हमें पुनी डिस्कशन करिवा समस्त समस्तकर फीडबैक को कमेंट सेशन कमेंट सेक्शन थ्रू रे देखि कि जणेबे वन शॉट रे भी हिंदू एडिटोरियल रे भी एटी मध्ये ठीक अछि नेक्स्ट क्लास पुनी आसीबो मोर नेक्स्ट वेडनेसडे कमिंग वीक वेडनेसडे आसीबो यूट्यूब सेशन आसीबो मोर ता पूर्वरु जेमति मु कहली ऑलरेडी कि संडे 11टा बेले आसी जिवो हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शनि रविवार 11टा बेले हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आसी जिवो वन शॉट आसी जाईची समस्त 7.5 घंटा रा क्लास सारी देला परे पुनी आउ गोटे वन शॉट क्लास आसीबो जोटी सब पढेबी इन्फ्लेशन बिजनेस साइकिल करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट सब डिस्कशन करिवे तो ता पूर्वरु से 7.5 घंटा क्लास समस्त सारी देथिबे सो दीज आर डिफरेंट टॉपिक्स जोगुडा हम डिस्कस करले नेक्स्ट क्लास रे हम आउ आगो डिस्कशन करिया ठीक अछि और रेगुलर क्लास एप्लीकेशन जेमति आज यूजुअल क्लास चली बर्तन सक्षम बैच स्टार्ट हेछि सक्षम बैच रे आज फर्स्ट क्लास नेछि मु इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स so that's all for this session let's wind up this class see you in the next class thank you very much thank you